So friend, a video रे हम discussion करिबा natural resources, environmental management रो natural resources chapter discussion करिबा. So what is natural resources? Natural resources are the components of the atmosphere, uh, hydrospheres and lithospheres and are useful for essential for life. They include water, water, plants, animal, soil, minerals, fossil fuel, etc. So natural resource माने आम आख पाखे जहाँ भी रिसोर्स सब देखुचे से सब naturally जदि अवेलेबल अच्छी that are called natural resources. जेमती कि आम आख पाखे एयर वाटर प्लांट्स एनिमल सॉइल मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स ये सब कहा अंडर आसीबो नेचुरल रिसोर्स अंडर आसीबो. Resources are defined as those materials which are required for the several comfort and prosperity of human being on the earth. They are divided into two categories. जो resource पूरा human being रा काम रे आसीबो survival पाई comfort पाई prosperities पाई these are the natural resources and these are categorized into two types. One is renewable non-conventional and another one is non-renewable conventional. तो जोगुरा आउ थरे हमको मिली परिबो एटा होची रिन्यूएबल आउ थरे हमें रिन्यू पाई परिबा एंड नॉन रिन्यूएबल माने आउ थरे हमें पाई परिबा नाही. तो दी प्रकारर नेचुरल रिसोर्स अछि. सो लेट्स डिस्कस अबाउट रिन्यूएबल वा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. Renewable resources are inexhaustible resources which have the ability to reappear by recycling. जहाँ को हमें recycling करी परिबा, reproduction करी परिबा, replacement करी परिबा, तो ये सब कहाँ अंडर आसीबे renewable बा non-conventional resource अंडर. They are also called biotic resources. हमें एगुरां को मध्य biotic resource करी परिबा. These renewable resources include sunlight, plants, animal, soil, water and living organisms. So sunlight, plants, animals एमने सब आछुनी का ना रिन्यूएबल माने सनलाइट रो में एनर्जी पाई परिबा प्लांट्स आउथरे ग्रोथ हे परिबा एनिमल्स आउथरे ग्रोथ हे परिबे सॉइल फर्टिलाइट अगेन हे परिबो वाटर को हमें अगेन प्यूरिफाई करि परिबा. तो ये सब हमें रिन्यूएबल एनर्जी अंडर रे आसीबो. However, if these resources are used faster then the rate at which they can be replenished they will soon run out. So obviously ये सब दिन सब जदि हमें ठीक भाव यूज न करि पाया बहुत जल्दी ताको सारी देबा तो ऑब्वियसली ए सब जिंस रिन्यू हेकिना आउथरे आसीबा कष्टकर हे जो जोटा कि हम मन को प्रॉब्लम क्रिएट हबो. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कन्वेंशनल रिसोर्सेस these are those take millions of years to form naturally and cannot be replaced once that are used. जो जो रिसोर्स मानन को हमें यूज कला पर सेटा क्रिएट हे त परिबो that is called a non renewable energy and these are takes millions of years माने हमको लक्ष लक्ष वर्ष धरी ए सब जिंस हवा को लागे जोटा कि संभव न संगे संग मिलिबा बहुत समय हमको लागि जबा सेटा अगेन मिलिया पाई. दे इंक्लूड्स मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस. तो एगुरा ऑलरेडी बना है कि अछि तो हम ताको यूज करूचे वंस एगा यूज हे गेला पर एगुरा बनेबाटा impossible एबे हे परिबो नाही. So some renewable resources जेमति कि forest resources which are about 23% of the total land area in India occupied in forest. हम देखिबा टेबल रे कि आगु को ए टेबल गुरा रे केते इंडिया रे forest available अछि and forest are biotic components that include trees woody vegetation etc. They are renewable natural resources that help human being to sustain life. तो एटा गोटे सर्वे को ईयर रे केते परिमाण रो फॉरेस्ट थिला. सो 2003 रे फाइनली
टिके फॉरेस्ट संख्या अधिक अछि बट धीरे धीरे डिग्रेड हे पारे लागिछि इंडिया रे इट इज द एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट ड्यू टू efficient forest management the total forest cover is increasing the use of forest are uses forest रो हमें कोन कोन यूजेस करिवा टिम्बर मींस काठ दिनस नै एस करिया द चीप इकोनॉमिक प्रोडक्ट of a forest is timber it is used to make furniture implement as and as building materials then fuel wood is the used as a source of energy mainly for cooking during destructive distillations of wood coal gas charcoal ammonia gas carbon and coke are used for produced then food ଆମେ forest ରୁ ପାଉଛୁ fruit leaves roots of plants and meat of forest animals are food for human beings ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ପାଉଛୁ then shelter forest provides shelter for birds reptiles mammals and insects then paper भी पाउछु bamboo and woods are used to manufacture different types of paper forest ରୁ ପାଉଛୁ then forest product ଯେମିତି honey wax gum medicines drugs spices horns and ivory are provided by forest plants and animals basically bamboo is widely used to making houses in villages बांबरू हमें रोप्स मैट्स कॉर्ड्स बास्केट एगुरा भी बनाउछे तो ये सब जिन भी पाउछे क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रे ये बहुत बड़ा रोल करूछि क्लाइमेट कंट्रोल होछि ट्रांसपिरेशन व्हिच इज लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम leaves of terrestrial plants into the atmosphere control the atmosphere balance including rainfall and cooling of the atmosphere so obviously climate control mechanism भी हमें forest ରୁ पाउछे provisions of employment millions of people सेठी चाकरी भी करछंती employment भी पाउछंती तो जेतेबेले फॉरेस्ट गुरा को हमें एक्सप्लॉइटेशंस कर देबा तो कोन प्रॉब्लम हो सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ forest cover much of the land area of the earth and are very important to human beings. They'll help in maintaining the ecological balance. Forest products such as timber, bamboo, fruits, honey, gum, drugs, economical not only locally but also used for export. Ancient time रो हम तक exports कोच जदि हमें एपली भाବରେ industrial revolutions आनिबा and majority रे आनिबा so it has been necessary to modify the natural resources into different versatile forms because जदि ए सब जिंस over exploitation से जिवो so एटा create करिवो deforestation so deforestation रे कोन होबे ना forest रा मात्रा कमी जाय जहा फल देखि environmental pollution बढ़ी जाय so सेति पई the United Nations Conference on Environment and Development 1992 defines deforestation as a land degradation in arid, semi-arid and sub-humid areas resulting from various factors. Climate variation of human activities प्रभाव पड़िबा deforestation loss of forest रू create हबा then forest surface को clean कले ही deforestation हबा this process involves the fellings of tree burnings and damaging of forests if this process continue unabated the forest cover will be lost within the next century गोटे 100 मास भितरे बा 100 वर्ष भितरे जदि हम एमती यूज करिबा सो डिफॉरेस्टेशन जदि यूज करिबा सो एटा क्रिएट माने बहुत जल्दी फॉरेस्ट सरी जीवो आर कारण कोन ना फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हबार बहुत गुडे कारण अछि फर्स्ट हैला एग्रीकल्चर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड ऑन ए लार्ज स्केल for cultivation of crops and for cattle grasping जो हमें चाष जमी रे चाष करिया पई की एग्रीकल्चर लैंड पई की डिफॉरेस्टेशन कर दोचे चरे दोचे बहुत जीव जंतु को चरेबा पई की एग्रीकल्चर लैंड बा हमें कहि परिबा लैंड यूज करा जाउची जोटा की डिफॉरेस्टेशन रीजन देन कमर्शियलाइजिंग trees are the cut for sale as timber and pulp. As a result, landless people gain access to the interior of the forest, which in turn result in further deforestation. तामने हमें जेतेबेले गछ गुडा को काटी दउछे गछ काटी केना बड़ बड़ गछर विभिन्न पार्ट्स को नै कि कमर्शियल काम करूछे तो एटा भी डिफॉरेस्टेशन होउची देन माइनिंग एंड डैम्स
Mining operations and dams damage or affect valuable forest land. Dams are also damaging downstream ecosystem. ଯେମିତି କି ଆମେ ମାଇନିଂ କରୁଛେ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ କାଟିକି ହିଁ ମାଇନିଂ କରାହଉଛି ତ ଡ୍ୟାମ ଯେତେବେଳେ ବନା ହଉଛି ବଡ ବଡ ଡ୍ୟାମ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକିନା ସେଠି ଆମେ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ପଠଉଛେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ ଦେନ୍ କ୍ୟାଶ crop economy. Crops are the crops that are grown solely for commercial reasons, like sugar canes and soybeans are called cash crops. In order to obtain more agricultural land for the cash crops, deforestation is carried out. This is done solely to add to the in the development of the third world economy. So obviously, maximum required hochi soybean and sugar cane. तो एसबूर चाष मात्रा बढ़ीगला ठू आम कैश क्रॉप एमको कैश क्रॉप इकोनॉमी कहुए तो युरार मात्रा जिते बढ़ फार्मिंग जिते बढ़ सो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन मात्रा से बढ़ी बढ़ी चलो देन पॉपुलेशन एक्सप्लोइजन ऑब्वियसली पॉपुलेशन मात्रा भी बढ़ी चलती 800 कोटी अराउंड लोक हो गले ऑल ओवर वर्ल्ड रे टू प्रोवाइड Dwellings, agricultural lands and roads, forests are destroyed. Fillings of trees provide a source of income for billions of people throughout the world. And forest products are useful in many ways. So these gains are offset by the following adverse environmental effect. तो ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଳିଆ କାମ ଆମେ କରୁଛେ population explosion ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ discussion କଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହଉଛି ନା biodiversity ରେ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି barriers of flora and fauna is destroyed. Humid regions change to deserts माने बसबासती स्थान सब कौन ना मरुभूमि रे परिणत हो जाउची हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज इफेक्टेड एटा बहुत मात्रा रे होची सो एठी हमें देखिबा नेक्स्ट ओटे हमर इंडिया मैप रे ओटे डायग्राम देखो तो एठी ए डायग्राम रो देखिबार रीजन होची जे हमर कोठी केते मात्रा रे अछि डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स स्क्रब सो एठी यदि हम देखिबा मो ओडिसा रे मैक्सिमम ए कोलकाता ए रीजन टे मैंग्रोव्स आ एठी किसी मात्रा रे मैंग्रोव्स अछि मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट ही देखिया को मिलुची ओपन फॉरेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट धीरे धीरे सो एटा क्लियरली विजिबल होनी बट ऑनलाइन रे नेट रे देखि हबो सो हम जे देखिबा एठी ऊपर पॉइंट रे हम डिस्कशन जहा करिथिले सो रीजन डिफॉरेस्टेशन रो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखिथिले तापर हम देखिबा नेक्स्ट अछि water storage. Forest areas affects heavily rainfalls. The thick canopies of the forest retain moisture for many days and the water dips down slowly into the forest floor. The water percolates into the soils and replenishes the reservoir of groundwater. तो एटी कोन होछि ना फॉरेस्ट रो मात्रा कमी गलाटो वाटर स्टोरेज कमी जाउछ वाटर रो लेयर टा धीरे धीरे तळ को तळ हेबार लागिछि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल Forest prevents soil erosions by binding the soil with the roots of a tree. Removal of tree loosens the soil. This causes landslide. हम जो देखुचे प्रायतः टीवी रे लैंडस्लाइड हमको देखा होची बड़ बड़ फॉरेस्ट रो तो ए सब हवार रीजन कोन ना पानी रो लेयर जेतेबेले कमी कमी जाउची तो गछर जो रूट ता ताकू जाबुडी धरुतला जो माटी को सेटा लूज हो जाउची जा फल रे बारंबार लैंडस्लाइड हवार लागिची रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मात्रा अधिक हो जाउची फॉरेस्ट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ताकू रिसाइक्लिंग करके वाटर टेक प्लेस बट एठी इरोजन हबा फल रे कोन होची ना एटा ग्रीन हाउस इफेक्ट धीरे धीरे बढ़िबार लागिछ सो जा फल रे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी बढ़ी चलची आ मोर डिफॉरेस्टेशन हबार लागिछ तो आ मध्य जो टिम्बर एक्सट्रैक्शन बा हम जदि कहबा गछ को काटिकना हमें बहुत माने यूज करछे द डिफरेंट वर्क रे सो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर टिम्बर कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स विभिन्न प्रकार एनिमल्स बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एमन समस्ते
कौन इनबालांस हो जाउची जहा फल लॉस ऑफ वैल्यूएबल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हो जाउची. It also causes a changes in the compositions of the natural forest as well as a decrease in biodiversity. Continue. Lodging leads to severe degradation of forest from which they are unable to recover. जोटा कि recover हवा भी जोटा कि impossible. So कौन reason ना clear filling complete destruction of native forest is generally termed as clear filling. Industrial timber is obtained by the clear filling method. So जितने हमें industry use करूचे तो clear filling create होची बा deforestation completely हो जाउची. Mechanical lodging, these trees are cut down mechanically using electronic saws or heavy machineries for pulling, lifting and transporting logs. Logs are sometimes transported by trucks or floated down by the rivers. मैं आगु जो भाया गछ काटुथिले एबे गछ काटिबार सिस्टम मेकानिज्म चेंज है मेकानिकल्स बेसी यूज होउची तो हमें बारंबार काटिया फଳରେ माने ट्रक गुरा को भी यूज करूचे जहा फଳରେ कि से जगह को पोल्यूटेड कर दूची टिम्बरिंग बेल. Selective logging. Timbers is harvested selectively based on commercially market-based species. Other species of trees are left standing. तो केवल जो गुरा दरकार मार्केट में सही गछ गुरा हमें यूज करूचे काटी के नहीं जाउचे बट अलगा गछ बंची जाउचंती तो जा फଳରେ इनबैलेंसिंग रहउची मतलब selectively lodging rows. Hand lodging. This is non-mechanical method which is labor dependent. Trees are cut down using handheld chains, saws and transported from the site manually to the river. तो एटा होची कोन ना एमती हवा फଳରେ कि मैनुअली जदि हम गछ काटुची तो हैंड लॉजिंग होची जा फଳରେ हेवी मशीनरी हम फ्लड पानी बोले जतबळे नै कि जाउची से सब काठ गुरा को तो सेठी गोटे कहबे माने कौन होची ना क्रिएट होची डिस्टर्बेंसेस बा pollution. Reduce impact lodging. Forest ecosystem are destroyed by conventional lodging methods. This can be reduced by the selection of site sensitive harvesting technique. तो इथि कोन ना हार्वेस्टिंग टेक्निक रे प्रॉब्लम क्रिएट होची. देन वाटर रिसोर्सेस. वाटर रिसोर्स रे हम देखिबा वाटर जोटा कि 70 to 71% एयर सरफेस रे अवेलेबल होची एंड इंडिया रे देखिबा एनुअली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रो गोटे टेबल हम देखिबा आगु जाई देखिए ऊपर ले कुछ गुजरात एरा सब लोएस्ट रेनफॉल एवर रिसीव करछु इट इज 15 सेंटीमीटर एनुअली बिकॉज ऑफ कोन ना pollution. So ये डायग्राम रे देखि परिबा तो एटी तो क्लियर देखा जाउनी बट जानि परिबा जे ए सब एरिया रे केते मात्रा जेंति कि 150 सेंटीमीटर वर्षा ओडिसा रे होची आंध्र प्रदेश रे 100 ए भले भाबरे डिफरेंट जोन रे डिफरेंट सेंटीमीटर ऑफ रेन होची एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. So देखिए मेजर फैक्टर causing the present water crisis. ए वाटर क्राइसिस रो मेन रीजन हैला ग्रोइंग पॉपुलेशन, inefficient irrigation, pollution, inadequate storage and means of harvesting. तामाने हम जदि पॉपुलेशन बढ़ेबा इरिगेशन को ठीक से माने इरिगेशन माने जोटे चाष जमी रे पानी दिया जाउची इनएफिशिएंट होची से सब भलो से सेटा को मैनेज करा जाय पारु नाही. सो इनएफिशिएंट इरिगेशन, पोल्यूशन, इनएडिक्वेट माने रखिबा पई कि पानी को सेति कि भलो स्टोरेज नाही. सो ए सब दिन सर प्रॉब्लम पई कि वाटर मैनेजमेंट ठीक से हे पारु नाही. विथ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड for water from each sector is on the rise. As a result, surface water pollution has also increased. At present, millions of people have no access to drinking water or adequate sanitation facilities. Then floods. The floods are one of the worst natural disasters. In India, about 90% of the annual precipitations is received during the monsoon, that is between June to September. Heavy and prolonged rainfall causes overflowing of lakes and rivers which leads to flood. तमने floods में हमारा reason जानी चाहिए over जदि बेसी रो बेसी वर्षा है गला तो flood है जो चीज़ जहाँ पर कि माटी रो जो कौन उर्वरता बा जोटा कहीं पर fertility सब सब नष्ट है कि पानी रे मिसिकी पड़े आसु. सो जेमति कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इवन ओडिशा ये सब फ्लड एरिया एंड बिहार बहुत हेवी लॉस होची फ्लड. Thus floods can be defined as
an irregular accumulation of water in an area. The cause of flood are overflow inland of tidal waters, runoff of surface waters, mud flow माने बहुत mud गुड़ा सबआडे व्यापी जिबा ए सब वाला flood disadvantages. आर इफेक्ट loss of lives तो होची, spread of disease भी होची, फर्टिलाइट एग्रीकल्चर लैंड डिफर्टिलाइट हो जाउची, ता ऊपर अलगा माटी माडी बसुची कोन जतबेले फ्लड होची तो माने अनउर्वर माटी गुरा जेंकी उर्वर माटी ऊपर फर्टाइल लैंड ऊपर से चढ़ी जाउची, जा फल रे कि चाष एते भलो भाव रे हेई पारनी. तापर आ गोटे अछि गोटे एरिया रे सिना वर्षा होची, आ गोटे एरिया रे ड्राफ्ट होची, माने सुखिला पड़ी जाउची. ड्राफ्ट इज अनदर नेचुरल calamity. It is defined as a long term deficiency of precipitations in a particular area. It is not just a physical phenomenon, it also has an impact on society. No region of our country is adequately protected from these natural hazards. How that influences the society depends on factors like population growth, urbanizations, water use trends, technology, government policy, social behavior, and environmental awareness. इस सब रो reason true dot इस मात्रा रे होच. Then dams. A dam is defined as a barrier across flowing water which obstructs, directs, or slow down the flow of water, occasionally creating a reservoir, lake, or impoundment. A water reservoir created by the construction of a dam stores water which can be used for irrigation, generation of electricity, aquaculture, and even recreational activities. Water is released from the upper level into water driven turbines placed at a lower. माने ओवरऑली कहया तला डैम हवा द्वारा हमरो बहुत गुडे एडवांटेजेस होची, बट प्रॉब्लम के क्रिएट होची. डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी को आरंभ करी पानी रो फ्लो, वाटर रो फ्लो को हम मैनेज करि पारुचे. खरा दिने पानी को स्टॉक रे रखी किना हमें तो को अलगा दिन वर्षा दिने पानी को स्टॉक को रखी किना हमें तो को खरा दिने यूज करि पारुचे. तो बहुत बेनिफिट्स रहउची. जेमती देखिबा आर बहुत डिसएडवांटेजेस भी रहउची, एमती न जे केवल बेनिफिट्स देखिले हमको वर्तमान 45,000 लार्ज डैम्स अछि वर्ल्ड रे. अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द इरिगेशन फार्मिंग. द आउटपुट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जोटा हमें एबे पाउचे पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी 21% डैम रू ही पाउचे. जोटा कि 30% ऑफ द डैम्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल फ्लडिंग ऑन लैंड, माने फ्लड को भी ये कंट्रोल करछि डैम रो. इटा एडवांटेजेस. सम ऑफ डैम्स हेल्प्स टू इंप्रूव इकोसिस्टम, किछि वेटलैंड क्रिएट करछि इकोसिस्टम. तो रिजर्वायर ऑफ डैम्स आर यूज्ड टू recreational activities like fishing, swimming, and boating बढ़िया जिनस भी ये पड़छ. बट प्रॉब्लम देखा जाओ, प्रॉब्लम टा कोन? लार्ज डैम्स हैव क्रिटिकली इन्फ्लुएंस ऑन लाइफस्टाइल एंड कल्चरल ऑफ नेटिव पीपल. तो से एरिया रो आखा पाखरे जोटी डैम होची तार कल्चरल एक्टिविटीज को बंद कर दो. जेमति कि हीराकुद रे हिची, तो हीराकुद रे आखा पाख से डैम जेमति कि हमरो हीराकुद पाखरे थिबा डैम सबु डैम रो पाखरे थिबा बहुत गुडे नेटिव प्लेसेस माने अलगा जगह को घुंची जंदी बा रिप्लेस हेचंदी, स्पेस हेचंदी. सो एटा गोटे सोसाइटी पे कि हम करछि. ओवरफ्लोइंग रिजर्वायर कॉजेस लॉस ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हैबिट. तो जदि ओवरफ्लो हे जीवो पानीटा तो ऑब्वियसली पानी बहुत स्पीड रे जीवो, जहा पर कि आखा पाखरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दबो. मेनी डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम रिवर विल रिजल्ट इन क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ वाटर क्वालिटी. तो जो जदि गोटे नई ऊपर बारंबार हमें डैम बनेबा सर्टेन डिस्टेंस रे, तो ऑब्वियसली एटा गोटे लास्ट को डिग्रेडेशन ऑफ लैंड आ कोन वाटर क्वालिटी खराब रहिबो एंड कॉज ऑफ फ्लडिंग. देन एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी रे प्रभाव पकेबो. फिशरीज, वेटलैंड्स, मेरीन इकोसिस्टम किछिटा क्रिएट करिवो, बट आउरी जोटा एग्जिस्टिंग वर्ष वर्ष धरि थिला ताकू प्रभाव पकेबो एंड सेको डिस्टर्बेंस करिवो. लैंड आर इफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. तो ऑब्वियसली पानी बंद हे जिबा, हम माने पानी को केवल मनुष्य चाहिए ही छाड़िबो, अदरवाइज बंद कर रखिबो, जा फल कि नेचुरल जेतबेले बाय नेचर रिक्वायरमेंट थिबो सेतबेले सेटा ताको मिली परिबो नै. तो एटा गोटे बड़ प्रॉब्लम. कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर. Agriculture consumes a maximum amount of water. With the growth of populations, the demand of water for
domestic and industrial purpose has increased rapidly. Millions of people depends on a river for drinking, irrigations and energy purpose. Consequently, water scarcity has increased. National as well as global conflict may arise over the control of shared rivers. This is inadequate distribution of the nation's water resources. The water resources are used as military tools. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ military tools ଭଳିଆ ନେଇକିନା use କରାଯାଉଛି water resource କୁ during military action. The water resources are used by nations or state or a group of people for political goal. ଆକୁ political goal ବି କରାଯାଉଛି ଯେମିତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନା ମହାନଦୀକୁ ନେଇକିନା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମିଶିକି political thinking ଚାଲୁଛି ତ political goal भी रहुछि तातरे when one's water resource may lead to the degradation of another एमती अब conflict हवा द्वारा कौन water resources conflict हवा जेमती कि river गंगा ऊपर ब्रह्मपुत्र river between India Bangladesh and Nepal रे रहिछि conflict कर्नाटक तमिलनाडु भितरे तो एमती अलग अलग जगह रे रिसोर्स को वाटर रिसोर्स को नहीं की conflict then आसीबा land resource तो land resource होछि at surface रो 29%, 140 million square kilometer. Land surface is a vital for the existence of human beings. Land is used for many purposes. Construction of house, roads, railway lines, airport, agriculture, grazing of cattle and industries. Due to the progress in cultivation technology, vast tracts of land have been cleared for the cultivations of crops and plantations. The distribution of cropland on global scale, South Asia distribution ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି 45%, UK 25, USA 51 ଏଇଭଳି ଭାବରେ land distribution ଅଛି. Land as a resource, land is a renewable resource but it is fixed. It is vital for our existence and it helps to preserve territorial biodiversity, regulate the water and carbon cycles, act as a store for basic resources like groundwater, minerals or fossil fuels, act as a sink for the solid and liquid waste from the basic for human settlement and transport activities. The topsoil support all plant growth. It is the life support system for all organisms. United Nations studies estimated that 23% of the all usable land has been degraded. माने बहुत प्रकार लैंड डिग्रेड हुआ द्वारा लैंड पोल्यूशन क्रिएट होछि. लैंडस्लाइड भी को डिस्कशन करछि. लैंडस्लाइड माने गछ रो प्रॉब्लम. गछ को जदी हम काटि दबा ता चेरोटा स्ट्रांगली होल्ड करि परिबनी माटी को एंड जोटा पहाड़ एरिया रे पानी तळे फ्लो हो गछर चेरो जेतु होल्ड नाही माटी रो तो से माटी को बहाई नबो. The rapid downward movement of mass of earth, a block of rocks or an artificial landfall made or of waste materials and earth is known as landslide. Landslides can cover many kilometers and are commonly in hilly regions during the rain. So लैंडस्लाइड में गछ तो जीव जीव से एरिया रो बायोडायवर्सिटी को भी नष्ट कर दबो. से एरिया रो पूरा नष्ट माने खसिकी माटी से एरिया को ही नष्ट कर दबो. The causes are classified into two category, external and internal. आर कारण दी कैटेगरी कराइछि. गोटाला एक्सटर्नल कारण गोटाला इंटरनल कारण. The external cause includes geometric change, unloading, loading, shock and vibration, while the internal cause includes weathering, seepage erosion and water regime changes. Geometrical change involves changing in gradient, height and slope length. Unloading and loading can be natural or human induced. Shock and vibration may be single, multiple or continuous. Physical and chemical changes occur by weathering. So the prakarara losses occur. Some non-renewable energy kono na mineral resources. Mineral resources mane these are the components that occur naturally in the solid state and are present in the earth crust. Some mineral consist of a single metal such as gold, silver, iron or aluminium or a non-metal such as diamond, sand or stone. So the prakaram repare gotala metal or a non-metal. Non-metal है गला diamond, sand and stone. ये type रो
minerals मिलिबा तो exploitations and use of mineral resources has lead to economic growth and development. A country developed due to agricultural, manufacturing and mineral resources. The pressure of population growth on its resources is a pressing problem. The industrial rich nations of the world are continually depleting energy. So obviously a non-renewable এইগুলা जो minerals को continuously ଆମେ ଯଦି exploitation କରିବେ तो obviously ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ ଯେମିତି କି coal is the fossil fuels means ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଟା ବନା ହେଇକି ଅଛି ତା ଭିତରୁ bitumens and brown coals are most important coals जोटा कि ଆମେ maximum use କରୁଛे and तार exploitation maximum हवा द्वारा से धीरे धीरे सरी सरी जबार लागिଛି petroleum सेमती गोटे is a mixture of many hydrocarbons. It is a brown colored viscous liquid. 40% of the use for transport and other works ଯେମିତି କି ଘରେ gas ଆମେ LPG यूज କରୁଛେ domestic fuel petroleum ए सब जिनस पेट्रोल के आसुचे एंड आमे ताको यूज କରୁଛେ petrol or gasoline diesels oil or heavy oil lubricant oil gears of vaselines perfume wax used to make scandal pitch used in road pitch जोटा कि used in roads तो ये सब जिनस आमे कोन करछे पेट्रोलियम प्रोडक्ट माने पेट्रोल आसुचंती एंड ए पेट्रोल को एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम जगह करा होची जा कि दिन दिन ये सब सरी जीवो एटा नॉन रिन्यूएबल natural gas it is naturally occurring gaseous fuel it is found in petroleum wells the main constituent of natural gas is methane जोटा कि नेचुरल गैस हमको मिल पारियो सो एतिकी ए सब्जेक्ट रे नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डिस्कशन करिया थैंक यू